Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. In this sheet, we will get to know about 3 different sections: English, Maths and EVS. So, let us start with our first subject, which is of English. The question says, fill in the blanks using the opposite words. Okay. इस सेंटेंसेस में आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको ऑपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है. ओके, या सो द फर्स्ट सेंटेंस इज इट हॉट और कोल्ड. यू विल यूज कोल्ड. हॉट गरम या फिर ठंडा. हॉट और कोल्ड. COLD कोल्ड. Is it hot or cold? क्या ये गर्म है या ठंडा है? See the next. This towel is wet, that is dry. ये टॉवल गीला है, वो सूखा है. This towel is wet, that is dry. So ये opposite word किसका है? Wet. Wet मतलब गीला, dry मतलब सूखा. WET wet, DRY dry. Abhi is a rich man, but Ron is poor. Abhi rich man है, but Ron क्या है? गरीब है, poor है. RICH rich, POOR poor. Abhi is a rich man, but Ron is poor. I don't have a new book. I have the old one. I don't have a new book. I have the old one. मेरे पास नई बुक नहीं है, मेरे पास पुरानी है. न्यू का ऑपोजिट वर्ड ओल्ड. NEW न्यू. OLD old. In this way, what you will do is you will fill the blank. इसी तरीके से आप सारे blanks को fill up करेंगे with the opposite words. Understood? Hot, cold, wet, dry, rich, poor, new, old. Inside, outside, early, late, old, young. Understood? Yeah. Now, let's move to our next question, which is of maths. The question is, solve the problems of addition. In this, what you will have to do is, you have to add. क्या करना है? Simply आपको add करना है. 24 plus 35. So पहले हम कहाँ से एडिशन स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द वंस प्लेस. वंस प्लेस से 4 plus 5 9. Yes, 4 plus 5 will be 9. 2 plus 3 5. Yes, so it will be 59. 5 9 59. Next, 7 plus 2, it will be 9. Yes, and 1 plus 1 2. So it will be 2 9 29. 2 9 29. 17 plus 12 29. 9 plus 0, what will be the answer? 9. Yes, 9 plus 0 will be 9. And 4 plus 5 9. So 9 9 99. 9 9 99. 2 plus 3, what will be? 2 plus 3 5. Yes, 2 plus 3 is 5. Now what will be 6 plus 3? 6 plus 3 क्या होगा? 9. So it will be 9 5 95. 62 plus 33
95. So in this way only you will add. क्या करेंगे? वन साइड से आप वन प्लेस से एडिशन स्टार्ट करेंगे. Ones, tens, 100. Understood? In this way you will add and solve these problems. Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एडिशन करना है बट विथ 10. हर नंबर को 10 से ऐड करना है. 10 प्लस 10 20. 20 प्लस 10 30. 30 प्लस 10 40. 40 प्लस 10 50. 50 plus 10 60. So in this way you will add these sums. Let us revise counting from 1 to 50. So speak with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. So we have read counting from 1 to 50. Let's move to our last section, which is of EVS, Environmental Studies. In this we have to fill the blanks. Blanks को fill up करना है by reading the sentence. Dash, animals are fierce and dangerous. कैसे एनिमल्स फायर्स और डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, वाइल्ड एनिमल्स आर फायर्स एंड डेंजरस. वाइल्ड एनिमल्स खतरनाक होते हैं. डैश, एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर फूड एंड शेल्टर. कौन से एनिमल्स इंसानों पर निर्भर होते हैं, किस लिए, खाने और रहने के लिए. डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन फॉर फूड एंड शेल्टर. Dash, animals are reared for a purpose like milk and meat. कैसे एनिमल्स को रखा जाता है मिल्क और मीट के लिए. Like cow, hen, chickens. These are the animals which are reared for a purpose like milk and meat. Dash, animals have gills. Gills किनको होती हैं. Fishes. Fishes have gills so that they can breathe in water. पानी में वो तैरती हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स होती हैं. Dash, animals have feather, wings and a beak. कैसे एनिमल्स के पास फेदर्स भी होते हैं, बीक भी होती है और विंग्स भी होते हैं. Birds. Understood? In this way you will complete all the fill in the blanks with correct word. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.